Hi, I don't know how to do intros anymore, so roll the intro. Hi, so today I'm going to tell you mistakes you have been doing to your hair and you should stop doing it right now. So let's go. Number one on my list is stop touching your hair. Stop touching your hair, guys. I just cannot stress enough how dirty your hands are. I'm little OCD about this. I hate touching my hair and my face as well. I just don't touch my face and I hate when someone else touches my hair. ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है. You are not allowed to touch my hair. I know बालों में जान नहीं होती है, but it's still a body part. People be like, and I'm like, stop touching it. दूर से बोलो ठीक है. अगर आप उनमें से हो, please stop doing it. It's not cute. Number 2 is not oiling your hair once a week. I know it's so cliche to say you should oil your hair, but in my experience it does make a difference because so जब भी आप ऑयल करते हो ऐसा तो होता नहीं कि आप लगा के ऐसे छोड़ दिया, नहीं, आप उसको मसाज करते हो, यू लाइक प्रेस सम पॉइंट्स. सो इससे क्या होता है कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो और अच्छे से होता है एंड या गुड थिंग्स हैपन. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. अगर आप ऑयल करके भी नहीं कर रहे हो तो you can like massage, but it's better to use an oil because if you are not using something then you are end up massaging like dry scalp, which is not good, and you will end up damaging your scalp, if that makes any sense. I don't know, I am explaining it well, but I think you got it. So number three is shampooing your hair too frequently, and I think you should not do it because आपका हेड ऑयल प्रोड्यूस करता है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ गुड. आई डोंट नो द 100% ये सही है कि नहीं, बट इट यू विल ड्राई योर स्कैल्प एंड और डैंड्रफ हो जाने का भी चांसेस बढ़ जाता है. सो आई डोंट थिंक सो यू शुड डू इट. यू शुड गिव योर हेड अ ब्रेक. आई पर्सनली डू इट ट्वाइस अ वीक और आफ्टर 3 days or 2 days. I think that's a pretty good amount of time. Next up is sleeping with your open hair. I know I do it sometimes. I'm like, मैं भी इस चीज़ के लिए गिल्टी हूँ, बट बाल खोल के सो गए तो आप अपने बालों को टैंगल कर दोगे, you will lose more hair. And also don't make a tight ponytail or something like that. You can make a loose bun. जिस पोजीशन पे आप सोते हो उसके हिसाब से आप कर लो. Yeah, that will help in your combing experience, I would say. Next up is not cleaning your combs. Oh my god, sometimes लोगों के comb इतने गंदे रहते हैं. It's just so disgusting to me. Clean your combs. It literally takes like 5 minutes, not even 5 minutes. It takes like 2-3 minutes. एक brush रख लो, toothbrush होता है, you can use that and just wash it up in like 2 days 3 days, max 3 days. उससे ज़्यादा मत करो. What happens is अगर आप अपने comb को साफ नहीं करोगे तो जो भी गंदगी आपकी hair में रहती है वो आपके कोम में जा रही है, और तब आप फिर उसको यूज करोगे तो फिर आपके हेयर पे आता रहेगा, तो इट विल बिकम अ विशियस सर्कल विच इज इट डजंट मेक एनी सेंस. यू विल एक्चुअली सी अ डिफरेंस कि आपके बाल भी जल्दी गंदे नहीं होंगे. यू विल सी दैट. सो या last 2 points I want to quickly mention is stop washing your hair with a hot water. तो last December बहुत ठंड थी और मैं नहा के वापस मैंने अपने बाल वॉश किए. उसके बाद मेरी कज़न गई एंड शी केम बैक एंड शी सेड कि मैं नहा नहीं पाऊँगी, इट्स टू कोल्ड. कैसे तुमने नहा लिया? एंड इट एक्चुअली डजंट बॉदर मी कि अगर मैं लिटरली गर्म नहीं करती पानी. यू वार्म वाटर टू wash your hair if it is too cold, but don't use hot water. So stop putting your hair into tight braids, ponytails and different types of hairstyles for long period of time. I remember when I was small, I was little, तो लोग मेरे टीचर्स और पता नहीं कौन बोलता था मुझे, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, कहते थे कि टाइट ब्रेड्स बांधोगे तो योर हेयर विल ग्रो फास्टर, विच इज स्टूपिड. It doesn't work like that. It actually damages your hair. For me what happens is I have long hair, okay, so मैं अगर थोड़ी देर literally अगर मैं half an hour भी अपना बन में कर लूँ, टॉप बन कर लूँ, it gets too hot sometimes, literally my roots
starts hurting so bad. मैं literally कभी कभी क्या करती हूँ, ऐसे बाल ऐसे पकड़ के रखती हूँ because it has weight, okay, it's long so it has weight. I somehow made peace with it and I get constant headaches. It's like every other day I get headaches. It's like normal for me. Okay, so मेरी डायरी में सब खत्म हो गए. I mean उसमें है अभी भी, but I will keep it that for another video. बस lastly मैं ये एक चीज़ mention करना चाहूँगी. Okay, I know अब मैं जब ये बोलूँगी आपको लगेगा यार ये तो सब कहते हैं, बट इट इज़ ट्रू. एंड आई फील लाइक अगर आपके इंटरनली बॉडी में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही होगी, जंक जा रहा होगा, देन वो बाहर शो नहीं करेगी. आई एम सॉरी बट दिस इज़ द ट्रूथ. यू हैव टू लाइक समझ लो, ये है, ये सच है. सो आई एम अ वेजिटेरियन. आई एम नॉट सेइंग कि वेजिटेरियंस के बाल अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम जस्ट telling you for the reference कि I'm a vegetarian. I'll eat a lot of greens. I'm not considering myself healthy, but I try to eat most like 70 to 80%. If I won't eat healthy तो मेरी skin, मेरे hair वो दिखता है. I know I'm eating junk, so it won't gonna glow my face. Good food to look good. Or most importantly, it's not about physical appearance. If you won't feel good from the inside, it won't gonna show up. So yeah, if that makes any sense to you. Vegetarian but also vegan. 90% of the time I'm vegan because it's too difficult to be vegan, especially in Allahabad, because I cannot find vegan alternatives to things I mostly buy from Amazon. Gets very difficult, but cutting out dairy made my life so. If you can see the pimple over here, I am eating paneer lactose, but I don't remember for past 1 year. ऐसा literally तभी होता है जब I start having milk or lactose. And also again it's like personal choice and it works on me. For some people they cannot live without dairy and it's completely okay. It's about your food choices and everything. I don't know, it's suddenly a food video ban gaya hai, but I'm just putting it out there. So I cannot talk about meat because I don't eat meat, but yeah, in कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं उसमें भी. But the most important thing I feel is the portion control. अगर आप किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, तो अगर आप healthy food भी ढेर सारा खा रहे हो तो it not gonna benefit you in any way. So yeah, that's what I wanna say. I think this video is going to be very long. ये portion बहुत ज़्यादा लंबा हो गया. Yeah, so that was it for today's video. These are the mistakes or common things that people do it unconsciously, consciously, but you should not do it. That's what I feel. That's my personal suggestion. Again, don't quote me on anything because मुझसे लोग constantly पूछते रहते हैं कि ओ ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. So that's why I made a video कि आपको नहीं करना चाहिए, and I'm gonna make another video क्या करना चाहिए आपको very soon. So subscribe for that. Bell icon को भी press कर दो so that you will get notified every time I post a new video. So that's it for today's video. I don't know how to do outros. Bye.